Okay, good morning, class. I hope that you are doing good in this pandemic. Today, we are going to learn about some other cases of active earth pressure. Now, here on your screen, if you can see that the case is merely about generalized case for Rankine active pressure. So, what do you mean by generalized case for Rankine active earth pressure? Here, some of the cases are very crucial. At that time, how you can calculate the active earth pressure, the force PA is very difficult. So, some of the theories are made for the determination of PA. So, the case is known as generalized case for Rankine active earth pressure, and as discussed earlier, Rankine has given the theory only for non-cohesive soil. So let us see what it is given. In previous section, we calculate Rankine active pressure for the vertical wall and horizontal backfill. But here we will calculate the lateral earth pressure for general case. General case means inclined wall and inclined backfill. This general case for granular soil only, that means pure sand. When there is a pure sand of well graded soil, then what will happen? We need to calculate. So you can see the first diagram. If you can see the first diagram, there is a height h and this is a soil, purely sand. So it is inclined at an angle theta with this particular incline line of soil, and this is the roadside or this is the inclination for embankment, whatever. With the horizontal it is making an angle alpha. Then you can say that PA is acting at h by 3 from base. Then if it is acting at h by 3 from base, we have to consider a right angle triangle where it is making a 90-degree angle with this line of soil, so it will make an angle beta. Further, if we solve, because we have to calculate all the values in the numerical form. When we calculate all the values in the numerical form, then what will happen is this is the soil with the height as pure soil with angle alpha with angle theta. We are considering that PA, force of active earth pressure acting at this point. Okay, so here is the point. So when it is acting at this point, then this point is, when this is the point, okay, where PA is acting, then we say that this is acting at h by 3 from base. This is your base, okay. This line is your base, so we are saying that PA is acting h by 3 from base. Now, if we have considered that it is a right angle where your PA is acting, but when you draw a horizontal line, what will happen? This is theta, and if you take an corresponding angle, then this will become theta. Okay, so this angle will become 90 minus theta and beta will remain as it is. Then what is alpha, beta, theta? Then alpha is inclination of backfill with horizontal. Then alpha is inclination with the backfill. This is your backfill. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये पूरा जो है ये सॉइल है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बैकफिल. And it is making an angle alpha with this horizontal dotted line. Then what is theta? Is the angle with the vertical. Then this is your vertical made by the embankment, and this embankment के साथ में ये theta angle बना रहा है. And beta inclination of PA with the normal to the wall. And this is your PA. Beta is making an angle normal to the wall. That means this dotted line is making 90 degree with this
line of your soil, which is normal. From trigonometry, the angle between the normal to the wall and the horizontal is theta. So how to calculate PA? Here the PA is vertical force into Ka. Okay, so this is your vertical force and Ka is your coefficient of active earth pressure. So vertical force, how you are going to calculate area of the vertical pressure, which is half base into height. So what is half base into height? So this is your gamma into Kh. Okay, this is your gamma. This is your gamma into H into Ka. Okay, so this is your angle. This is your base of this diagram. So what will happen? Here area of vertical pressure is half base into height. So height we are taking it twice. So half base is your gamma into h and height is h again, so it will become h square. Now how you will calculate Ka, which is coefficient of active earth pressure. So from this formula you are going to calculate Ka. Formulating in mathematical manner, you will calculate Ka cos alpha minus theta. All this formulation is done. Then xi angle is calculated to calculate the angle beta. So xi angle is given by this formula sin minus 1 sin alpha upon sin phi minus alpha plus 2 theta. It is formulated by derivations which is given in the book that you can see. Then beta is again calculated. When you get the xi angle, then beta is calculated. Then PA is calculated. Half base into height. This is your vertical force. Area of vertical pressure is half base into height. That is half gamma h square into Ka. So Ka here is also calculated by trigonometry method. The location of PA is h by 3 from base as shown. So therefore PA into horizontal direction is this much and PA in vertical direction is this much. So this is how you have to calculate PA in both cases, is horizontal direction as well as in vertical direction. Now fifth case is case of vertical wall and inclined backfill. When the backfill is vertical, what happens? So backfill is inclined. That means your wall is vertical, but your soil is inclined. Why the soil is inclined? Because the road may pass or the embankment may be vertically inclined at an angle alpha. If it is this case, then how you will calculate the angles and how you will calculate the force PA. So for calculating this vertical wall and inclined backfill, there are two possible cases. One is you have to consider the pure sand. That means your phi is equals to 0, angle of internal friction is 0. Second case is C phi soil. C phi soil means cohesion is also there and soil is also non-cohesive soil is also there. So internal friction angle is also considered. Now second, so we'll see the first case, which is your first case. First case is pure sand. Okay. So when it is a pure sand and your backfill is inclined, then alpha angle has to be calculated. So you can see that this is your height h and your PA is acting inclined on this wall h by 3 from base. This is your base, so it is acting h by 3 from base. This is your backfill side or road side, whatever construction you are taking, and it is making angle alpha. Same angle alpha we are considering here by the angle of correspondence. Now here PA is inclined with an angle alpha with the horizontal, so effective vertical pressure will be gamma into H. So this is only soil. When soil is there, what happens? This is your vertical line and you are considering the vertical pressure. So this is how the distribution
considers an gamma h into Ka will be your intensity. ठीक है, ये फोर्स नहीं है, ये जो है ना, ये फोर्स नहीं है, ये जो आपका बेस है यहाँ से यहाँ तक, दिस बेस, इसकी इंटेंसिटी जो है आपकी, दैट इज गैमा एच इंटू के ए। तो आपका जो पी ए है, वो पी ए का एंगल क्या है, पी ए का आपका, व्हाट इज योर पी ए, पी ए जो है वो आपका फोर्स है, तो फोर्स कैसे ऐड करेंगे, पी ए इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ कैसे कंसीडर करेंगे हम, हाफ, यहाँ पे आपको पूरा एंगल भी कंसीडर करना है, हाफ बेस, sorry, writing is something not getting because I am writing with mouse. So this is your half base into height. तो बेस जो है आपका गैमा इंटू एच इंटू के ए आ गया है, और ये जो एच है ये दो बार मल्टीप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पे हाफ गैमा एच स्क्वायर इंटू के ए। इन दिस कंडीशन हाउ यू आर going to calculate the value of Ka is given here. Cos alpha into cos alpha minus under root cos square alpha minus cos square phi. Phi is considered, phi is the angle of frictional resistance, so that you have to consider when it is pure sine also, upon cos alpha plus cos square alpha minus cos square phi. Why cos is considered? Because we are getting an angle with the horizontal. Any angle made with the horizontal is known as your cos, so that's why cos is to be considered. So this is how you are calculating the value of active earth pressure in an inclined condition when wall is vertical to the backfill. Next condition is for C5 soil, when your soil is cohesive as well as non-cohesive soil. Then what happens? Sometimes your Z, PA is acting at different condition. There is no H by 3 here now. You can see this diagram, this red line, if you can see, ये अगर आप रेड लाइन देख रहे होंगे तो दिस इज हाउ योर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज मेड, एंड gamma h ka is your intensity at the base which is making angle alpha with the corresponding to this angle. Okay, so vertical pressure कितना है आपका, gamma into h, और horizontal pressure कितना है आपका, gamma h into ka. So how you will calculate ka dash cos alpha. When dash is there, then it becomes effective coefficient of active earth pressure. So horizontal pressure will become gamma h Ka dash square cos alpha. So how you will calculate Pa? Pa is 1/2 base into height. तो 1/2 base into height करना है आपका। यहाँ से आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर का डायग्राम ड्रॉ हो रहा है। प्रेशर जो है आपका, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, so from here to here you have to consider ZC critical height, and जो remaining रहेगा that will be your H minus ZC. So 1/2 base into height क्या होगा, 1/2 base आपका क्या रहेगा, gamma h, this is your gamma h Ka dash into cos alpha. Why? Because this distribution is inclined to an angle alpha, and कोई भी horizontal के साथ एंगल बनता है तो उसे हम cos कंसीडर करते हैं, therefore cos alpha into height. So height क्या रहेंगी, our diagram is from this point, distribution diagram जो है वो ये point से बन रहा है, that's why total h minus zc will be your height. So therefore Ka can be calculated from table. This is given in your Punya book, so you can calculate by this. You have to know, this is your homework. So then you will calculate Pa into h, that will be Pa in cos alpha, and Pa into V, Pa sin alpha. When this distribution diagram is inclined,
Then for horizontal it will be cos, and for vertical it will be sine. So we'll see the next. Okay, Rankine's passive lateral earth pressure. Before this, we have studied two cases: earth pressure at rest, K0, P0. Next, we have studied Rankine's active lateral earth pressure, Ka, Pa. And now we are going to study Rankine passive lateral earth pressure, Kp and Pp. So here we'll see how it is acted. The wall in this case pushed into the soil. The transformation factor of the vertical pressure to horizontal pressure in case is Kp, and the lateral earth force is termed by Kp. Uh, so what will happen? Kindly see the diagram first, then I will explain you. Please quickly have a look on the diagram. Okay, have you seen? Okay, very fine. So you have seen the diagram. So let us have the explanation. Firstly, vertical pressure to the horizontal pressure is called Kp. That is, K is the coefficient of lateral earth pressure and P is for passive. And lateral earth force is termed as Pp, where P is the force and small p is your passive. So for calculating Kp, we have to consider the formula 10 square 45 plus 5 by 2. So the only difference between active and passive work pressure is to calculate the formula of K. Okay, when K is considered, it is 1 minus sin pi upon 1 plus sin pi, and when Kp is considered, it is 1 plus sin pi upon 1 minus sin pi. That is the difference. Now, if you can see, this is your wall. So when this is your wall, there is a total soil here. ये पूरा जो है आपका सॉइल है यहाँ पे. अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो ये टोटल बैकफिल है. ठीक है, तो ये आपका टोटल बैकफिल है. वहां पे आपका एक्ट कर रहा है पी ए. लेकिन दूसरी तरफ से भी अगर सॉइल कंसीडर हो रहा है, तो आपको यहाँ पे और एक force मिल रहा है, that we are considering PP. When this happens, the wall will try to go in this particular direction, and it will try to move inside. It will try to move inside. So that will be considered here. So this is your diagram, and this is your height. So height का क्या होता है कि this is moving in a left hand side, so we are considering minus. So minus delta h, that will be your height. Okay, that will be your difference कि आपका जो वॉल है वो 0 से लेके ये पॉइंट तक, बी पॉइंट तक हो रहा है. ठीक है, तो बी पॉइंट तक हो रहा है. तो आपका जो ये वॉल का मूवमेंट है वो कितना हो गया, माइनस डेल्टा इंटू एच. देन डेल्टा इज डिफ्लेक्शन एंड एच इज योर हाइट, एंड दिस इज फॉर passive work pressure. So there is also one more condition. So what is that condition? For C5 soil, again we are considering for C5 soil, when C is considered, then you have to take care that it will be 2C under root Kp. But here it is considered positive. Why it is considered positive? Because the diagram is from left hand side. So in case of passive earth pressure, the value K is Kp, and when the wall moves into the soil, particles will converge and the cohesion of the soil will increase. So what does it mean? The soil particle will try to move inside. In active earth pressure, what was happening? The soil particles were trying to move outside, और उनके
बीच का जो कोहेजन था या उनके बीच की बॉन्डिंग थी वो जो कम हो रही थी, और कम होने की वजह से सॉइल जो है वो उसको आगे की तरफ धकेल रही थी। लेकिन इस कंडीशन में कन्वर्ज हो रही है, एक जगह आ रही है, दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, द कोहेजन इज इंक्रीज। ठीक है, उनके बीच की बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो इन दिस केस ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर वी एड द लैटरल अर्थ प्रेशर। तो इस कंडीशन में हम लोग लैटरल अर्थ प्रेशर को ऐड करते हैं, और इसके पहले जो हमने एक्टिव अर्थ प्रेशर किया था वो वॉल को आगे की तरफ धकेल रहा था, इसलिए हम उसको माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो ठीक है, तो बिकॉज ऑफ कोहेशन is increased, we are adding the lateral earth pressure. So what is that lateral earth pressure? It is the value 2c under root k which is constant along the layer, यानी जितनी हाइट है पूरे हाइट तक वो कांस्टेंट रहेगा, and differ when the value of c or phi is changed, that is constant for each layer. So first condition में क्या होता है, ये आपकी वॉल है, तो दिस इज योर वॉल। ओके, तो अगर आपकी ये वॉल है और ये हाइट है, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ सॉइल कंसीडर कर रहे हैं, तो सॉइल कंसीडर कर रहे हैं यानी गैमा कंसीडर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो डायग्राम बनेगा सॉइल के लिए, डायग्राम कैसा बनता है हमारा, हमारा सॉइल के लिए डायग्राम बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, और प्लस ये जो आपका रेक्टेंगल बना है, ये रेक्टेंगल किसके लिए बना हुआ है आपका, ये रेक्टेंगल बना हुआ है आपका कोहेजन के लिए। ठीक है, तो कोहेजन के लिए ये बना है आपका, ये जो है ये सॉइल के लिए बना है, तो सॉइल का हमारा जो इंटेंसिटी रहेंगी यहाँ पे 0 रहेगी। ठीक है, और ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना हो गया, गैमा एच के पी। तो गैमा इज फॉर density of soil, H is total height and Kp is your coefficient of passive earth pressure। और ये इंटेंसिटी जो है ये हमारे किसके लिए है, ये कोहेजन के लिए है। तो यहाँ पे आपका सॉइल भी है और यहाँ पे आपका सी भी है। तो अब हमने पहले डायग्राम किसका बनाया, हमने डायग्राम बनाया गैमा के लिए, अब हम सॉइल सी के लिए डायग्राम बनाया हमने। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, 2c under root kp। then what will happen, you have to merge the diagram। तो आपको क्या करना है, for basic formulation and for calculating the value of pa आपको दोनों डायग्राम को ऐड करना है। तो दिस इज योर फर्स्ट डायग्राम एंड दिस इज योर सेकेंड डायग्राम। तो पहला डायग्राम आपका किसके लिए बन गया, आपका पहला डायग्राम बन गया है कोहेजन के लिए, और दूसरा डायग्राम आपका किसके लिए बन गया है, आपका दूसरा डायग्राम बन गया है गामा के लिए। सो व्हेन यू ऐड दिस, दिस विल बी 2c अंडर रूट kp, और नीचे क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटेंसिटीज जो है वो ऐड हो जाएगी। सो दैट विल बी gamma h kp plus 2c under root kp। सो इफ देयर एग्जिस्ट सरचार्ज, अभी यहाँ पे सरचार्ज लोडिंग यानी कि Q जो है वो ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पे हम लोग Q जो है वो हमने अभी तक के ऐड नहीं किया है, वी डोंट हैव Q हियर। So what will happen, you have to add the Q also। when Q is added, then what will happen, okay, so when Q is added what will happen, Q plus। ठीक है, यहाँ पे और एक डायग्राम बन जाएगा Q का रेक्टेंगल, तो Q plus gamma h kp plus 2c kp। so this will be your case for C phi soil। relation between lateral earth pressure and movement of the wall। So what will happen, relation between the lateral earth pressure and the movement of the wall, if you can see this is the zero line। तो ये आपकी जीरो लाइन है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि ये सॉइल का जो प्रेशर है ये बढ़ते 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 ऐसा नीचे की तरफ आ जाता है। तो वॉल का मूवमेंट, अगर सॉइल का मूवमेंट अवे फ्रॉम द बैकफिल होता है क्योंकि ये सॉइल है,
away from the backfill होता है तो that will be your passive active earth pressure, and towards the backfill होता है तो that will be your passive earth pressure, और सेंटर में जो है वॉल बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी तो that will be your earth pressure at rest, which is known as your P0. So this is how you have to consider the values for both the cases. Now see here, there is a comparison of the state of lateral earth pressure. Kindly go through the conditions here. Okay. Now first condition, if you can see, so this is your wall. Okay, it is moving in a right leftward direction. That means the wall is moving away from the soil, because here there is a soil. So it is an active earth pressure. The wall is moving away from the soil. So this is again a wall in a rest condition, but it is not moving because there is a slab over here. So the soil condition, that there will be no movement of the soil, so that will be the condition of rest. And next is the wall is here and the wall is moving in a right hand side, so this will be passive earth pressure. That means wall is trying to move into the soil, so that will be the passive earth pressure. So you have to take care that when wall is moving away from the soil, that is active earth pressure, there is no movement, then uh, the condition is at rest condition, and if the wall is moving into the soil, then it is known as your passive earth pressure. So these are the three cases. Now here there are some cases which we have to consider when we are going to solve the numericals. You have to go through my site rashmibade.wordpress.com. In that there is unit number 3. Please download that unit number 3 and keep in front of you from next class when we are going to solve the numericals, because if you know the cases, you know the diagram in front of you, then only we will be able to solve the numerical from next class. अगर आप आपके सामने नहीं रखेंगे तो आप जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे दिस केस, फर्स्ट केस इज यूनिफॉर्म सरचार्ज. यूनिफॉर्म सरचार्ज मीन्स देर इज अ लोड. दिस इज योर लोड क्यू. Okay, and this is your collisionless backfill with unit weight gamma. When this is the condition, what is happening? You are having Ka gamma, you are having a load of Q also, and you are having a distribution diagram of gamma also. So here your condition is, this is the diagram that Q जो है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है. ठीक है, आपका जो Q है, आपका जो सरचार्ज लोडिंग है, दैट इज यूनिफॉर्म. दिया हुआ है कि आपका क्यू जो है वो पूरा का पूरा ये जो एच है वहां तक एक्ट कर रहा है. दैट्स व्हाई के ए क्यू का जो डायग्राम है, फ्रॉम हियर टू हियर देयर विल बी सेम इंटेंसिटी विच इज के ए इंटू क्यू. फिर हम जब यूनिट वेट गैमा के लिए बनाते हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो जाता है और ये इंटेंसिटी बढ़ के यहाँ तक आ जाती है. यानी हमारा जो सॉइल की इंटेंसिटी है वो यहाँ 0 हो जाती है और नीचे में जो है वो क्या हो जाता है, के ए इंटू गैमा एच. दिस इज लैटरल प्रेशर डायग्राम व्हेन योर यूनिफॉर्म इज सरचार्ज. ठीक है, फिर हम लोग इसे जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने लिए जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसे रेक्टेंगल बना देते हैं और इसे राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे. तो हम लोग को इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है. जब आप एक्सटेंड करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी के ए गैमा एच ई, वेयर एच ई इंटू क्यू. व्हाट इज एच ई? एच ई इज क्यू अपॉन गैमा. So total Q divided by this gamma will give you this value, and you will get the intensity here also. Okay,
So next case, submerged backfill and stratified backfill. So it means that your soil is stratified also, मॉइस्ट भी रहेगा और सैचुरेटेड भी रहेगा। तो दो कंडीशन होती है। मॉइस्ट का मतलब होता है कि आपका गैमा सैट आ जाएगा उसमें, और सैचुरेटेड भी गैमा सैट आ जाता है। लेकिन सबमर्ज्ड अगर हम लोग बोलेंगे तो गैमा डैश आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप कंसिडर करेंगे, दिस इज योर हाइट and you are having H1 and H2, that means कि ये हाइट में आपका मॉइस्ट सैंड है जिसे हम गैमा बोल रहे हैं, और यहाँ पे इसके नीचे में आपका आ रहा है गैमा डैश यानी सबमर्ज्ड एंड सैचुरेटेड सॉइल। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले दो केसेस हो गई है। तो ये H1 है आपका, तो H1 में आपका डायग्राम क्या बन जाएगा? के ए गैमा डैश इंटू H2। ठीक है, ये जो इंटेंसिटी है, ये यहाँ पे एक इंटेंसिटी आएगी। तो ये इंटेंसिटी मॉइस्ट के लिए क्या आ रही है? के गैमा डैश इंटू H2। गैमा डैश टू यहाँ पे के इंटू गैमा आना चाहिए, लेकिन ये इंटेंसिटी जो है हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करके यहाँ पे ला रहे हैं फॉर अवर बेटरमेंट। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? गैमा डैश इंटू H2 हो जाएगा। ये हाइट जो है H1, ये H1 होना चाहिए और ये H2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये H2 हाइट आ गई है। ठीक है, तो ये उल्टा कर दिया इन्होंने, दिस इज H2 हाइट और ये H2, तो हम लोग भी यहाँ पे H2 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे के ए गैमा डैश इंटू H2 कंसिडर हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सैचुरेटेड लाइन आ गई है। तो यहाँ पे डायग्राम कैसे बनता है? ये आपका डायग्राम जो है, दिस इज फॉर योर फर्स्ट कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं इसे टोटल इंक्रीज कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? के ए गैमा इंटू H2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी के ए इंटू गैमा इंटू H2 है, गैमा डैश नहीं है। लेकिन गैमा डैश हमको क्यों कंसीडर करना है, दैट इज आई विल एक्सप्लेन। फिर ये जो हाइट है आपकी, ये आपकी हाइट हो जाती है H1 की। तो H1 के लिए यहाँ से फिर से आपकी इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है और ये इंटेंसिटी ये हाइट तक आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी बढ़ गई है। तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि ये जो हाइट है यहाँ से हम लोग इसे नीचे कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये कंसीडर करने के बाद यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी है, यहाँ पे ये इंटेंसिटी जो है, ये इंटेंसिटी यहाँ के लिए है। ठीक है, तो यही इंटेंसिटी आपकी कहाँ रहेगी? यहाँ पे रहेगी। लेकिन अब गैमा का क्या हो जाएगा? गैमा डैश हो जाएगा, बिकॉज दिस इज योर सैचुरेटेड सॉइल। फिर हम लोग, दिस इज फॉर सॉइल, तो ये इंटेंसिटी यहाँ से आ रही है सॉइल की, इसलिए यहाँ पे जो है वो आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? के ए इंटू यहाँ का गैमा क्या है आपका? गैमा डैश इंटू H1। ठीक है, ये सॉइल के लिए डायग्राम है। ठीक है, तो ये सॉइल के लिए डायग्राम बन गया। अब ये सैचुरेटेड है, इसमें पानी है, तो पानी है, इसमें वाटर है, तो वाटर का भी हमको डायग्राम बनाना है। तो यही कंडीशन से वाटर का भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे, और ये इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी गैमा W इंटू H1। H1 क्यों आ रहा है? क्योंकि वाटर जो है वो हमारे ये लेवल से कंसिडर किया जा रहा है। तो ये लेवल से वाटर कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए गैमा W इंटू H1। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर लैटरल और प्रेशर का ये डायग्राम आपका बन गया है व्हेन सबमर्ज बैकफिल एंड स्ट्रेटिफाइड सॉइल कंसिडर हम लोग करते हैं। तो next is your inclined surcharge or sloping backfill. When this is the condition, what will happen? You have to take small element. जब आप small element लेते हैं, ये आपका टोटल H है, आपका जो पी ए कंसिडर हो रहा है हॉरिजॉन्टल पे, ये बीटा डिग्री पे एंगल एक्ट कर रहा है, और ये जो है ये दिस इज हाउ योर ये जो लाइन है ये आपका बन रहा है
प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, और ये एंगल बन रहा है आपका बीटा विद द करस्पॉन्डेंस एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, और इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी दैट विल बी योर के ए gamma into h, and it will have h/3 from base. Earlier also we have discussed that ka आपको this formula से calculate करना है. Now, when this case is also we have studied earlier PA, how to calculate when inclined backfill of the wall is considered. So we have already studied this. Now, when acting on pressure of cohesion soil, when the soil is cohesion, okay, so 2c under root n phi has to be considered, where n is normal and phi is the cohesion with angle का frictional फोर्स या फ्रिक्शनल एंगल, या आप कंसिडर करेंगे रेजिस्टेंस एंगल. तो ये जब ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड दिस केस. एंड यहाँ आपको क्रिटिकल हाइट कैलकुलेट करनी पड़ती है. तो क्रिटिकल हाइट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला Hc इक्वल्स टू 4c into gamma. We'll see it in the numerical when we solve in next class. Okay, Coulomb's wedge theory. So Coulomb's wedge theory will study further. From next class, we are going to consider numerical. So I request you all to kindly please pen down your register. Take your register, calculator, and the notes of your unit number 3 with you, because when we will solve this numericals, you will be requiring this diagram. Whatever diagrams I have shown you, you will be requiring this diagrams for the calculation purpose. Okay? So for calculation purposes, these diagrams, whatever I am showing you, are required. So kindly download the file and keep it in your mobile. When we will solve the numerical, I will tell you how you have to solve all these numericals. So this is all for today. If you have any queries, you can ask me, you can WhatsApp me, you can call me anytime. So thank you for today. Any questions right now? No questions. So we are ending it.